बहुत ही बेहतरीन और अच्छी काउंसलर है और अपने स्कूल कोर्ट से बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग कर दी। Okay. ओके, थैंक यू सो मच सविता सिस्टर। मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो आप पूरी सुन नहीं पाए, बट आई एम श्योर आपने पूरा ब्रीफ कर दिया है। तो कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके, सो गुड इवनिंग एंड ओम शांति एवरीवन। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स का एक डेमो काउंसलिंग एंड वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। ए वेरी वार्म वेलकम all the viewers who are watching us from the YouTube and Facebook, because you know these sessions are going live at both these places. If you want to contact us, you can approach us through our website www.spiritualseva.co.in. मेरा नाम उमा है, मेरे साथ आज मेरे को पार्टिसिपेंट्स हैं पीयूष भाई जी और नीतू सिस्टर। हम दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल काउंसलर्स भी हैं, तो आप हम में से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। Now the purpose of these sessions is to create awareness among the society about the issues that we are having, how we deal and how the counseling is done, and also through this we share the knowledge with our fellow students. हम सभी डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज कर चुके हैं और सभी हायर लेवल के कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। तो एक बार फिर से शिव परमात्मा को याद करते हुए और हमारे सभी सीनियर्स एजुकेशन विंग के जो हैं उनकी बेस्ट विशेस के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग मेरे नंबर पे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, व्हिच इज 7070492444। So before we start our session for today, let me just brief you about scenario. आज का हमारा जो सेशन है, जैसे कि पोस्टर पे दिया गया है, चाइल्ड काउंसलिंग का एक सेशन है। तो हमारे पास पीयूष भाई और नीतू सिस्टर आ रहे हैं एक्टिंग एज अ कपल, उनका रोल प्ले है। तो वो हमें बताएंगे कि आज किस तरह की सिचुएशन है जो हम चाइल्ड काउंसलिंग में देखते हैं और किस तरह से इसकी काउंसलिंग की जाएगी, ये हमारे सभी व्यूअर्स देखेंगे और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी सीखेंगे। So let us start the first scene today. Please come. आप म्यूट हैं नीतू सिस्टर। Am I visible and audible, sister? Yes, yes. Okay, so please come. आइए, बैठिए। Good evening. Good evening, Emma जी। आइए, बैठिए, दोनों लोग बैठिए। Thank you. बताइए, आपके नाम बताइए। जी, मेरा नाम पीयूष है और मेरे साथ मेरी वाइफ है नीतू। और आपके पास हम आए हैं, काफ़ी हमें पता चला आपके बारे में, आपकी काउंसलिंग के बारे में। तो एक हमारे साथ भी इशू था जिसको हम चाहते थे रिजॉल्व करना, उस वजह से हमने आपसे अपॉइंटमेंट लिया और आपके पास आए हैं। तो अगर आप कहें तो हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। श्योर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। और हाँ, मुझे याद है आपने अपॉइंटमेंट लिया था। आई एम श्योर कि यहाँ तक पहुँचने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, आपने बड़े अच्छे से वो लोकेशन शेयर कर दिया था, तो हम एग्जैक्टली पहुंच गए, उसकी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, पानी वगैरह आप ले सकते हैं एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल और आराम से इत्मीनान से मुझे आप अपनी बात बताइए। जी, ये मेरी वाइफ नीतू आपसे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगी, बिकॉज हमारे बच्चे को लेकर के है, 10 साल का बच्चा है और उससे रिलेटेड कुछ इशू है जो शी विल एक्सप्लेन इट टू यू बेटर, क्योंकि एज अ मदर शी इज मोर विद द चाइल्ड।
तो मेरे ख्याल से वो Yes. आपको बताएंगे। हाँ, बताइए नीतू जी कैसी हैं? Uh, what to say? See, every mother is so worried about and concerned about the child. So same is with me. Uh, I'm into I'm into a teaching profession, right? So Okay. at the moment, I'm not teaching because I've left the job for my child. But what I've noticed that he was such a brilliant, I would say, brilliant and confident child and student throughout. But I've noticed a gradual, decline in his performance in the last, you can say, around about 6 to 7 months, right? And he was never like this before, and it's a cause of concern for me. Reason being that I have left the job, I'm totally available for my child, and still the things are not in line. I would say I would not use this word in control because then it has a different perception. But as a mother, as a teacher, I'm able to perform all the things for my students. But when it comes to my own child, I see myself failing down. I've seen him as a very brilliant person, I would say. Although he's a very young kid, but still he was very uh, active. He was very confident. He was very good in communication. But continuously I'm getting a very negative feedback from his teacher also. And now I really don't feel happy about going for the PTMs also, because somewhere at the back of my mind I know what the teacher is going to put forward. The other parents are happy, their children are doing well, and my child was doing well, but now he is not, and I'm unable to understand. We are giving him all the comforts, we are taking care of uh, all the interest, all the areas, but still there is something which we as a parent are not able to I could say diagnose. So we are here to take your expert guidance to help us come out with the real potential of our child. All that briefing about your child, and I can really understand what you are going through, because I also have a son of a similar age and I've come through many challenges. So I started doing counseling so I can understand more. I started learning counseling. I can really connect with you on this. Okay, so let me see how I can go through the details of your child and also of your family. I'll be asking you a few questions to understand your life, to understand your family routine in a better way, so that I can give you better suggestions on this. And accordingly, whatever you like, you can proceed through, and we'll see. It's like it might take few sessions for us to clarify the things, because I do not want to impose certain things on you. So you both as couple and as parents might have to go through certain changes in your life, in which you may have to bring simple routine changes in your life and involve certain activities, right, which I'm sure you will be able to do it happily, because I can see that you both are very much concerned about your child, his performance and his well-being, which is very natural for parents. So I really appreciate that you have left your job for some time to give full attention to your child, which is really, really appreciable, because sacrificing your career for the sake of your family, for the sake of your child, is something which really needs to be appreciated for us as women. तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रोत्साहन करती हूँ इसका। और मैं ये भी समझती हूँ कि बच्चा अभी आपका 10 साल का है। Like we'll try to keep the session bilingual. Is that okay with you, Neetu sister? हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। Yes? Okay, good. All right. तो नीतू सिस्टर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि उसका परफॉर्मेंस पहले काफी अच्छा था, और आप नोटिस कर रहे हैं कि पिछले कुछ 6-7 महीनों से अप टू द मार्क नहीं है और आप सेटिस्फाइड नहीं है, एंड यू वांट टू नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, राइट? तो हम लोग मिलके बातचीत करेंगे। ओके, विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ है, बिकॉज समटाइम्स हम लोग ना सिचुएशन से काफी अटैच हो जाते हैं, especially when it comes to our near and dear ones.
तो हम उस रिलेशनशिप में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ सही हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं, या कहाँ पे हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है और कहाँ पे हमें एम्पैथी, सिंपैथी, या फिर कहाँ पे हमको केयरिंग वाला एटीट्यूड दिखाना है, पैम्परिंग कहाँ पे करनी है। क्योंकि बच्चों के केस में पैम्परिंग और डिसिप्लिन, इन दोनों का बैलेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप एक टीचिंग प्रोफेशन से आती हैं, आपने भी बहुत सारी चीजें नोटिस की होंगी, और आप आज जो सुनेंगी मेरे मुंह से उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सारी बातें तो आप पहले से जानती थी और पहले से फॉलो भी करती थी। बट जस्ट इन केस मे बी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए या अटैच हो गए, या कुछ प्रेशर हो गया फैमिली बैलेंस करने में या बच्चे में, कि आप समहाउ उस चीज का बैलेंस नहीं मीट कर पाए, तो विल सी इन केस इट इज हैपनिंग। ठीक है, तो आपने बताया कि 10 साल का है आपका बच्चा। क्या मैं नाम जान सकती हूँ आपके बेटे का? बेटा है वो, राइट? सन? Yes, his name is Aditya. Very nice, very sweet name. So Aditya means, is it a synonym for son? Yes. Yes, Surya ka. yes, he has been Yes. bright like a sun. Now the Correct. you could say the aura is diminishing, so I'm really worried. Wow. No, you don't worry about it. You know the things about aura and you know the meaning of Aditya. That itself says that how deeply you are concerned and how you understand these things. So that's very much appreciable once again. तो आदित्य जैसे कि नाम ही है उसका, वो सूरज जैसा चमका है और वो वापस से सूरज जैसा ही चमकेगा और हमेशा ऐसा ही प्रकाश लाएगा आपकी जिंदगी में और सबको प्रकाशवान करेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, हर चीज का सोल्यूशन होता है। और जब हम मिल के बातचीत करते हैं तो हम वो भी चीजें, वो जो पर्दे लग चुके हैं कुछ इन चीजों के ऊपर जो शायद हम नहीं लग पाए थे, हम साथ में मिलके हटाएंगे तो विल डेफिनेटली बी एबल टू सी द बेटर साइड ऑफ इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। हम देखते हैं कि आदित्य, आपने उसका नाम बताया, तो मुझे आप आदित्य के बारे में कुछ और बताइए। लाइक जैसे वो जब से वो बॉर्न हुआ उसके आसपास कौन लोग रहते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है आपके घर का, आपके घर में कौन कौन है, स्कूलिंग वगैरह कैसी रही है, प्ले ग्रुप में उसका एटीट्यूड कैसा रहा है, लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। इसके बाद मैं आपको असेसमेंट का शीट भी दूंगी जो आप बच्चे की हेल्प करिएगा कि वो जितना भी कर पाए उसके बारे में वो करे। ठीक है, जो हमारे प्रोसीडिंग सेशंस होंगे उसमें। लेकिन आज आप मुझे सिर्फ एज अ मदर, एज अ ऑब्जर्वर, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप भी और पीयूष भाई आप भी एज अ फादर, आपने बच्चे के बारे में जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन की है एज पेरेंट्स, वो मुझे बताओ जी। Okay, since he was born, so everybody, since he's the first child of this generation, so everybody was very happy throughout the family. Everybody is so attached, and he's very adorable. So somewhere initially, I had this hitch that a lot of pampering would spoil my child, but then this did not happen. Things got very well. Everybody adored him. Everybody pampered him, but they took care that what we want the child to become and how we want the child to be disciplined and overall improvement. So right from the age of, you can say he was 8 months and 9 months, he had been a super active child. His observation was fantabulous. He used to copy the things very nicely and very accurately even at the age of 1. Means that's commendable. So we were really satisfied that yes, the child is all fine by all means, whether it's physical or whether it's emotional, whether it's intelligence and everything. And by God's grace, things fell in place. Throughout when we got in the play group, when he got in the play group, then also he performed very well. The teacher liked him. They have been very appreciative about Aditya. So as the name says, he has been, just the center of attraction for everything. He's a bit naughty also, because since he's so much active, a bit of naughtiness comes in hand. But then that was okay. We want the child to be active, to be by himself. But gradually, as he entered like 3 years, 4 years, and now he is, I don't know what things are missing from our side.
because my husband also, he's also very supportive. He takes care of the things which I suppose I forget something, so he will take care of the things. So we both together ensure that yes, nothing is missed for him. We don't over pamper him also at times, and we just take care. But still, couldn't understand that what went wrong, and that was also one of the reason that we, collectively decided that yes, I need to be at home so that I can see his activity around the day. So even the teacher told that now he does not pay too much attention. Although when at times when he is asked certain questions or he is asked to participate in any kind of competition, he performs excellently. But then it is a very momentary situation, which was something continuous earlier. Now it is very momentary. He will excel in one of or the two things, in the month of, you can say, in a period of 5 to 6 months. So now a gradual, this is an alarming situation. I've left my job also. I keep on discussing with my husband time and again about the things, and we do not want to pass on any negative energy also to our child. So now it was like a saturation point, and now we got to know about you, and you are like a perfect one. I could find somebody around. So this was it. If I've missed something, so my husband can tell if he wants to add up, and if anything is left, you can ask. Means if I forgot to tell you something, any questions? Sure, sure. Yes, Piyush Bhaiji, please let me know your take on this. How have you seen him growing, and what are the things that you have observed as a father, as a mentor? Well, right from beginning, as Neetu said, that he is adorable. I mean, still he is adorable, and he was pampered as much as we could. But yes, again, the value system, we tried to inculcate the value system that is required in a child, and we did not compromise anywhere, in during the pampering or during the love and affection that we gave to him. And she being a teacher, I mean, she was well versed with the kids and all. So again, that was an advantage, and she left her job for this particular sake of bringing up the child. So everything was fine, everything was in the positive direction, but somehow, his activities and somehow his concentration towards his studies has decreased, what I observe. And he's more into different things, more into mobile, playing with the mobile and watching television, and all these things are more in his daily activities rather than the studies part. So maybe he's getting some diverted into some of these gadgets and all. That might be the reason of his decline in studies. That is what I observe. But since I'm in a private job, so I don't get much time to be at home, and she's the one who's there most of the time, taking care of him. But yes, it is a point of concern, and since we being educated and being successful in our careers, we do look forward for our child also to grow in a similar situation and excel in his life. But this variation has disturbed us a lot, and we are a lot concerned about the child, how we can how I mean, we've tried our best. We've tried our best to understand what's going wrong, but the only thing which I understand is that yes, he is more attracted towards these technology, these gadgets and all. Yeah, that's true. So maybe that is what is disturbing his concentration or something. That is my view. And yeah. Thank you so much, both of you, for giving me those inputs and the details about your child. तो एक बात और जो मैं जानना चाहूंगी, आपकी फैमिली में और कोई भी है, एल्डरली, इन-लॉज वगैरह? My parents are there. I mean, my mother, father, both are there, and they also, play an important role as being the senior members of the family, and the child is very well, connected with them also. And basically, the senior members of the family, they are the ones who are, they inculcate the value system into the child, the generation that is coming. And they do their best, and then they are also, taking care of the child as much as they can.
So everything is fine, everything is positive. There's nothing wrong from our side, you know. That is the point of concern, that there's nothing wrong from our side. But still the child is getting deviated. He's not able to perform. His performance is not stable, you know. That is the basic point of concern, which is very important in this competitive scenario, you know, the way things are growing, the way things are getting competitive. So a child has to excel, you know, and that excel should be permanent, not temporary. So this has become temporary. This deviations and, you know, ups and downs is what is disturbing us a lot. So there might be some psychological reasons which you might be able to find, because you being a counselor and a perfectionist in your profession. So that is why we came to you to understand, so that you can understand better. Maybe we as parents have not been able to understand, and you can guide us better, you know, in this direction. Sure, I will try my best, Piyush ji and Neetu ji. Let's see what we can do about this. Okay. So मुझे ये बताइए कि in case the child gets upset, होता ही होगा ऐसे कभी कभी, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि किन बातों पे वो अपसेट हो जाता है, या खाना खाने के बावजूद उसका एनर्जी लेवल कभी आपको ऐसा कम दिखा हो, या उसका मूड खराब दिखा हो, the rest of the situations being neutral? जैसे मैंने आपको बताया उमा जी की गैजेट्स की तरफ उसका अट्रैक्शन रहता है, विच इज नॉट पॉजिटिव साइन, यू नो, एट दिस एज. सो हम लोग कोशिश करते हैं उसको कि जैसे जब भी वो मोबाइल पे ज्यादा देर गेम खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो हम उसको समझाते हैं, उसके हाथ से मोबाइल हम ले लेते हैं. तो ही गेट्स इरिटेटेड, ही इज नॉट हैप्पी विद दैट, because he wants to play with the mobile, he wants to play games with the mobile, and we are objecting and we are trying so that he doesn't play games in the mobile. तो उस समय वो इरिटेट हो जाता है, थोड़ा सा रिएक्ट भी करता है, थोड़ा सा ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड, ही डजंट हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज एट दिस एज कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो कोई भी चीज अगर उसके मन की नहीं होती है तो उस पर तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है, इरिटेट करता है. ओके, तो ये गैजेट्स के लिए अफेक्शन टुवर्ड्स गैजेट, ये तो आजकल दिख ही रहा है सब घर में, एंड इट्स नॉट जस्ट चिल्ड्रन, इवन द एडल्ट्स आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन द स्क्रीन. और जैसे कि नीतू सिस्टर ने भी बताया कि बहुत अच्छे से कॉपी करता था वो हर एक चीज, और उसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था. तो ये भी कुछ चीजें होती हैं जो वो घर में ही हम लोगों को देख के कॉपी करते हैं, लाइक द वे वी टॉक, हाउ वी सोशलाइज विद अदर्स, एंड हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग. अब द थिंग इज दैट कि हम एडल्ट्स के लिए काफी मजबूरी भी हो गई है इस समय स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज ये जो 2 साल का टाइम लिया कोविड के टाइम में, हम लोग फिजिकली तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. दिस वाज द ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ स्लोली थिंग्स आर ओपनिंग अप, स्कूल्स वगैरह भी अब खुलने लगे हैं, लेकिन ये हैबिट जो हमारी एक बन गई है उससे थोड़ा सा डिटैच करना अपने आप को मुश्किल हो गया है, अनटिल एंड अनलेस हम माइंडफुली इस चीज को करें. इफ वी आर अवेयर ऑफ दिस देन वी स्टार्ट डूइंग दिस. सो हैबिट्स डू टेक टाइम चेंज करने के लिए. तो इन सब चीजों पे हम लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है. तो मैं ना एक असेसमेंट शीट दूंगी आपको, विच यू विल टेक एट योर होम. बच्चे के साथ जब उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो, प्लीज हाइड ऑल द गैजेट्स व्हाट एवर ही यूजेस, और टीवी वगैरह भी थोड़ा ऑफ करके थोड़ा सा टाइम निकाल के छुट्टी के दिन जब भी हो पॉसिबल, तो थोड़ा सा उसके साथ बैठिएगा, उसको भी दिखाइएगा वो शीट कि ये हम लोग बस ऐसे ही प्लेफुल एक्टिविटी है कुछ जो करेंगे, यू नीड टू टेल योर चॉइसेस अबाउट दिस. उसमें बहुत सिंपल से ही क्वेश्चंस होंगे बच्चों से रिलेटेड, लाइक उसका फेवरेट कलर क्या है, व्हाट इज हिज फेवरेट सीरीज ऑफ कार्टून दैट ही वॉचेस, उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है, द फूड दैट ही लाइक्स. इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें, क्योंकि अभी मैं आपसे तो पूछ लूंगी लेकिन इट माइट डिफर विद द चाइल्ड कि उस समय उसका मूड क्या था बोलने का, और कभी कभी एक से ज्यादा चीजें भी पसंद होती हैं बच्चों को, तो ही विल प्रोबब्ली राइट ऑल दोस थिंग्स, या फिर वो बताएगा और आप बस लिख दीजिएगा, क्योंकि बच्चे को अभी खुद भी नहीं पता है कि वो क्या करेगा आगे, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. एक तो ये बात है, ठीक है. तो थोड़ा हमको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी लाइट पड़ेगी उस शीट को करने के बाद, जब आप फिलअप करवा लेंगे उसकी मदद से. और मैं अभी के लिए आपको, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट सेशन ही है, मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि
Though we are living in a machine age right now, बहुत सारे गैजेट्स हैं हमारे आसपास, टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड हो चुकी है और हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. So we have like started using the machines and gadgets in such a manner कि ये हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा ओवरटेक करती जा रही है. It's like kind of being dominating our lives. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, जहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना जरूरी है, जितना जेन्युइन है, उतना ही हम स्क्रीन का यूजेज करें, स्पेशली तब जब हमारे घर में छोटे बच्चे हैं. बिकॉज these children are observing each and everything, minute से minute. हम कभी कभी ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, शायद बच्चा देख नहीं रहा है, तो मे बी वी कैन talk about something, crack a joke or something. लेकिन उनकी सेंसिटिविटी at the age of 10 is very very high. ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता इसलिए सकती हूँ कि एक तो मेरे घर में भी बच्चा है, दूसरा वी गो एंड डू सेमिनार्स इन द स्कूल्स, जहाँ पे हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस तरह की फीडबैक्स हमको मिल रहे हैं कि बच्चा दूसरे रूम में था और कुछ ऐसी बातें पेरेंट्स के बीच में हो रही थी. देयर वाज सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट दे हैड इन द फैमिली, और वो बात बच्चे तक पहुंची और बच्चे ने कुछ रिएक्ट किया अगले दिन स्कूल में जाके, जबकि वो बात डायरेक्टली बच्चे से रिलेटेड नहीं थी. ही समहाउ कुछ डायलॉग उसने बच्चे ने बोला जो कि इस इशू से रिलेटेड था, जो फैमिली में डिस्कस हो रहा था. तो दीज आर द थिंग्स जो हमें ये बताती हैं कि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो भी एनर्जी उनके एटमॉस्फेयर में है वो उसको फील कर रहे हैं. तो एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, जैसे कि आपने ऑरा की भी बात की, ये बहुत बहुत जरूरी है दैट वी कीप अ चेक ऑन द एनर्जी अराउंड अस. एज अ मदर इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मदर का कनेक्शन जो है वो बच्चे के साथ वो क्लोजेस्ट है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है व्हेन इट कम्स टू सी हाउ द एनर्जी इज चेंजिंग इन द फैमिली. क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बैठाना, उसे बैलेंस करना मोर चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी सबको अपना स्पेस चाहिए. व्हेन यू आर इन अ फैमिली, हस्बैंड है, बच्चा है, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना है. और ये जो वाइफ का रोल होता है, जो नीतू सिस्टर आपका रोल है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इस समय, बिकॉज यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन. और सबकी एक्सपेक्टेशन आपसे सबसे पहले हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है कि आप घर में हो, अभी आप काम नहीं कर रहे हो, सबसे पहले बच्चा आपकी ड्यूटी है, उसको तो आपको परफेक्टली देखना है, साथ ही साथ बाकी फैमिली मेंबर्स की जरूरतों को पूरा भी करना है. दो आई अप्रिशिएट कि एज हस्बैंड वो जितना कर सकते हैं वो जरूर करते हैं. ही इज अ वेरी कोऑपरेटिव एट हैंड. तो यू डू हैव अ वेरी कोऑपरेटिव हस्बैंड, जिसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए. और आपके पेरेंट्स आपके साथ है, विच इज अनदर ब्लेसिंग, क्योंकि हर समय 24/7 एक मदर कितना अवेलेबल हो पाएगी. सो एवरीवन हैज टू गिव देयर फेयर टाइम. अगर बच्चा घर में है, मॉनिटरिंग करना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके आसपास किस तरह की चीजें हैं. तो जस्ट इन केस अगर वो स्क्रीन में टाइम स्पेंड कर भी रहा है, वे समवन हु नीड्स टू मॉनिटर कि वो क्या देख रहा है. जैसे कि वायलेंट सीरीज जो चल रही है अभी, पबजी वगैरह चीज जैसी चीजों को बैन भी कर दिया गया. तो बीच में ऐसा देखा जा रहा था कि बच्चे नेबर्स वगैरह के यहाँ जाते हैं जैसे खेलने, इंटरेक्शन करने, या बर्थडे पार्टीज वगैरह में, तो कुछ 1-2 साल के बड़े बच्चे भी उनको दिख जाते हैं हु आर इनटू काइंड ऑफ प्लेइंग दीज गेम्स ऑन देयर मोबाइल फोन. क्योंकि अब स्कूल के लिए तो हर फैमिली के लिए जरूरी हो गया था बच्चों को फोन देना, तो वो इस तरह की गेमिंग हैबिट्स में आ गए. वहां पे वायलेंस वाले भी गेम्स हैं या कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स भी हैं विच आर दे गेटिंग एक्सपोज टू. अच्छा, अब ये 8-10 साल के बच्चे जो हैं, एंड दे आर एक्टिव ऑल्सो, दे आर ब्रिलियंट ऑल्सो, तो इनको कुछ ना कुछ एडवेंचर के लिए भी चाहिए होता है, बिकॉज देयर इज अ मेंटल डाइट दे नीड टू टेक. तो उनको अपने वो मेंटल साइड को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर गेटिंग टू द स्पीड थिंग. जब तक वो रेसिंग वगैरह चलता है तब तक तो ठीक है, बट देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर हॉन्टेड सीरीज, हॉरर सीरीज. तो ये चीज मॉनिटरिंग करना बहुत बहुत जरूरी है कि वो जो देख रहे हैं उसका कंटेंट क्या है. क्योंकि अगर हमने उनके हाथ में थोड़ी देर के लिए भी फोन दिया और उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, गूगल इज वेरी स्मार्ट, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी स्मार्ट.
they can actually see through कि किस तरह का कंटेंट सर्व हो रहा है इंटरनेट पे। और ऑब्वियसली अगर वो बच्चे से रिलेटेड ऐसा कंटेंट है जिसमें हॉरर कैरेक्टर्स हैं और कुछ कार्टून कैरेक्टर्स हैं, तो वो इतना गेस वर्क तो कर पाते हैं कि किसी के बच्चे के हाथ में फोन है। सो दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू शो मोर एंड मोर सच कंटेंट्स कि वो एक्सेस हो, और उसके थ्रू उनको अपने एड्स डालने का भी मौका मिल जाता है। सो इट्स ऑल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एजेंसी जो गैजेट्स के थ्रू आ रही है हमारे घर के अंदर। और इफ चिल्ड्रन आर बीइंग एक्सपोज टू सच कंटेंट्स, कहाँ पे कौन सा कंटेंट उनके माइंड के कौन से फैक्टर को एक्टिवेट कर दे, कौन सा उनका माइंड में जो हम बोलते हैं कॉर्नर है, लाइक देयर आर डिफरेंट कॉर्नर्स एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ब्रेन जो हम जानते हैं व्हेन वी डू द मेंटल स्टडी। तो कौन सा कंटेंट देखने से उनका क्या फैक्टर एक्टिवेट हो जाए, ये हम बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट, एज गाइड, एज मेंटोर इन द हाउस जो भी है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये थोड़ी चीजों का आप ध्यान रखिएगा जब तक हम लोग सेकंड सेशन करते हैं, और ये शीट आप लेके जाइए, ठीक है। दूसरा मैं ये जानना चाहूंगी, अगर आप मुझे एक शॉर्ट में बता सके आपका फैमिली सीन कैसा होता है, एन एवरेज डे ऑफ योर फैमिली, हाउ डज इट लुक लाइक, कोई भी आप में से बता सकते हैं कि कैसा होता है। Family, see, not many people live, as he said. We both are child and my in-laws. And touch wood, as you said, I'm blessed to have a person, a partner like you who understands everything. And I don't regret to leave my job. But then it is an added responsibility now because now I'm available. So the day starts with, I have to get up by 6 because I have to prepare the lunch, breakfast for my. And since my father-in-law is diabetic and my mother-in-law is also suffering with some kidney issues, so need to take care of their diet and everything also. She takes care of the child at times, but then it's major responsibility of me as a mother. So the day goes off like this. After the breakfast time, everything is done. So that 1 or 2 hours that I get, I just keep on thinking, how should I go? What should I do for my child? And see these things, these problems, uh, they are like it has become a vicious circle. I've got trapped into. I'm unable to find a way out. So the child goes to school now. Since the after the COVID, the schools have started again. So he goes to school. Husband drops him on the way, so I don't have to go and drop him. At times, I also go when I feel that yes, at times I should also accompany him to the school. Otherwise, he drops him, and then in the afternoon, my his grandparents they go and pick him up. He enjoys that also. That yes, my grandpa and grandma have come to pick me up. So he comes back, I offer him lunch, and I ensure that he takes a good sleep because the rest is also important for him to grow properly. And once he gets up in the evening, so I just offer him some snacks and milk and everything. And I ensure that he plays some outdoor games for a while. And I keep a watch on the kind of friends that he has in the vicinity and the kind of interaction. So many a times his grandparents accompany him to the playground, or else means one of the family member has to go because we would just want to see the kind of, we don't put any restrictions on him, but then we are there as a silent observer. Then he comes back, he freshens up, and then sits back for at least 2 hours of study. And by the time he finishes his studies, it's dinner time. So by 8:30 or max to max 9, he's done with his dinner. And while doing the homework, I ensure rather that yes, I'm able to denote those 2 hours, and I update myself that what is going on in all the subjects, what is he studying, what he is interested in, and what is he finding difficult. So by God's grace, we have not put him to any tuitions because he doesn't require it. And don't know about the future, but for now he doesn't require any tuition. And if he gets stuck, so when his father comes back, I just update him also about everything. And if he feels that on Sunday
study and all, so that if any doubt is left, he clarifies, and if there is requirement for him to talk to the teacher. So in the PTMs, he ensures that he takes a leave or some kind of, half day or something, so that he can accompany me to the PTMs as well. And just we have dinner and the day is done. Okay, good. ठीक है. You explained it very well. So I've got an idea that everything looks fine on the outer side at least. So what we can do is, please take this sheet that I'm giving you, the assessment sheet, and try to fill it up with the help of your child, finding out his likes and dislikes. And I would be able to, comment more on this when we do the next session. So let's meet after 3 to 4 days. I'll give you the dates. I'll send you the appointment screenshot, and let's meet after probably 3 days. Okay, with the assessment sheets. Sure. All right. Thank you, both of you. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Okay. So we meet after 3 days, scene 2. Please come. Okay. Good evening. Welcome, both of you. Good evening. Aye. How are you, sister? I'm very good. Thank you for asking. How are you? Yeah, I'm great. After the counseling session, things have changed, so I'm really happy about everything. Okay. How is Aditya doing? Is he fine? He's quite better in the aspects I was concerned. He is really feeling better, and even we both are also happy with his progress. Okay, let me see the assessment sheet that I gave you. Have you brought it? Have you got it filled? Okay, thank you. So I'll just have a quick look on this. Okay, so his favorite color seems to be red and blue. Yes. Yes, and he wants to make a gaming app, as he says. जैसे कि comments में यहाँ पे लिखा हुआ है, games में उसका interest है on the mobile phones. Has a very technical mind. When I left the job, he was into, as his father told, he was into a lot of gaming and all. But then gradually I observed, and I have tried to shift his attention towards science, more science oriented games and videos, so that his energies are a bit streamlined. So I could see the result. Right. Okay. और यहाँ पे उसने अपने कुछ फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में भी दिया हुआ है, which is like छोटा भीम. He loves to see छोटा भीम, which shows कि छोटा भीम is a kind of series जिसमें काफी bravery की चीजें दिखाते हैं. He's a very nice character. He gives moral education also. उस कार्टून सीरीज को मैंने भी देखा हुआ है. So that's very nice कि उसका इंटरेस्ट जो है वो काफी पॉजिटिव साइड में है. ठीक है, गेमिंग वगैरह में बच्चों का इंटरेस्ट होता ही है. सो व्हाट यू कैन डू इज इन अ ईयर और सो ही विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू कोडिंग. तो आप उसको कोडिंग क्लासेस में डाल सकते हैं टू सी हिज इंटरेस्ट गेमिंग साइड में. इससे वो एनिमेशन वगैरह की फील्ड में भी आगे निकल सकता है. राइट. असेसमेंट शीट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. ऐसा कुछ एबनॉर्मल सा तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है. आई थिंक इट्स फाइन. मे बी हिज वेट, प्लीज चेक विद द फिजिशियन ऑल्सो. उसका हाइट और वेट का जो रेशियो है, the weight seems a little higher. ठीक है, तो ये आप एक बार फिजिशियन से भी कंसल्ट कर लीजिएगा. would you please tell me about his normal diet कि थोड़ा ऑयली खाना आपके यहाँ ज्यादा बनता है क्या, स्पेशली बच्चे के लिए? We are a foodie family, I would term it as. So everybody follows that very rich diet. So he happens to, first of all, lot of things he has got in his genes. Can't do anything about it. But then we know that it's very important for us to check his diet. So he eats a lot of junk food. He prefers, although many a times I'm able to curb down, but then it's not possible for me always, because we have elders also in the family. And every time we cannot say no. If they are saying something, he's a child, he should not be restricted with so many things now and then. So at times we have to take a step back. So yes, his diet is not what it should be.
Right. I understand it goes challenging for a woman to handle so many people in the family and take care of their food requirements. And yes, we all love to eat. So ठीक है, खाने में उतना कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो पाता है, खाना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बट इट्स जस्ट दैट कि हम लोग को थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमारी बॉडी हमारे साथ नहीं देगी, इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग फिजिकली वेल, तो हम वो सारे काम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। और एक बच्चे की एज के लिए ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है। सो इफ टू मच ऑफ जंक इज गोइंग, इफ टू मच ऑफ अनहेल्दी ऑयल स्टफ, रिफाइंड ऑयल इज गोइंग, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ और उसके जो भी चैनल्स हैं वो सब ब्लॉक होने का खतरा है आगे की एज में चल के। अभी तो वो चलिए एक्टिविटीज करके शायद उसको बैलेंस भी कर ले थोड़ा, पर कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेशन अंदर ही अंदर होने लगता है, जो कि प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो एक मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के बारे में आप रीड आउट करना शुरू कीजिए। एंड इफ यू कैन स्पीक टू एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो आपको आपके बच्चे के पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से डाइट रेकमेंड कर सके। जैसे कि जितना मैं जानती हूँ, देयर आर क्वालिटीज पर्सनल बॉडी टाइप के हिसाब से ना, कुछ क्वालिटी, कुछ गुण होते हैं हमारे, जिसको कि हम ये सतो, रजो और तमो कहते हैं। एंड इज लाइक समथिंग लाइक वात, पित्त, कफ, ये केमिकल कॉम्पोजिशन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जिसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब ये बैलेंस स्टेट में होते हैं तो ये गुण होते हैं, और जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तब हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस चीज का इम्बैलेंस हो रहा है, वेदर इट इज वात, पित्त और कफ। और ये इंग्लिश में भी यही टर्म्स ही यूज होते हैं, लेकिन ये आप किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के साथ बैठेंगे तो वो आपके बच्चे का लाइफ स्टाइल और उसका ईटिंग हैबिट्स, उसका जो कुछ भी है, कैसा रिएक्ट करता है वो हर एक फूड के बाद, वो सारी स्टडी करके आपको डिटेल में एक आयुर्वेदिक डाइट चार्ट बताएंगे कि आपको क्या डाइट फॉलो करना चाहिए। स्पेशली बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पहले करिए ही करिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप सभी लोग फैमिली में जितना हो सके आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल को फॉलो कीजिए डाइट में स्पेशली। ठीक है, अब ये बच्चा तो देखिए छोटा है, वो मेडिटेशन वगैरह अभी उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन आप लोग बड़े हैं, आप लोग थोड़ा मेडिटेशन को इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ में। बिकॉज व्हाट मेडिटेशन डज इज, एक तो अपने आप ही केमिकल बैलेंस करना शुरू कर देता है मेडिटेशन, बिकॉज योर एनर्जी गेट्स प्योरिफाइड व्हेन यू कनेक्ट टू द सुप्रीम सोर्स। कभी आपने मेडिटेशन किया है? Does anyone do meditation in the house? I have, I would say, read about it, and because since I was a teacher, so meditation is talked about a lot in the schools and everywhere. So, but if you ask about practicing it religiously, I have not done. Once or twice, I have just heard about it, tried to do it, but then it's not that easy. I did not find it that easy. Okay. ठीक है, तो मेडिटेशन इज समथिंग व्हिच यू नीड टू इंक्लूड इन योर डेली लाइफ, की बहुत बहुत जरूरी है अभी आज के वक्त में। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगी, आप कहाँ से मेडिटेशन या स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल की एंट्री अपनी लाइफ में करा सकते हैं टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग इधर उधर से सुनते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन वी गेट कंफ्यूज। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, अच्छा ये वाले प्रैक्टिशनर वो बताते हैं, वो ये बताते हैं, तो वी गेट कंफ्यूज कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। सब कुछ अच्छा है तो वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? ठीक है, तो इसके लिए द बेस्ट सोर्स इज ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज की तरह पढ़ाया जाएगा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। देयर इज अ 7 days राज योगा मेडिटेशन कोर्स जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। उसका पहले थ्योरी पोर्शन आपको पूरा अच्छे से समझना है टू अंडरस्टैंड कि सोल लेवल पे चीजें क्या होती है, हमारा कॉम्पोजिशन क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू। उसको आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, धीरे धीरे उसको समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा एंड स्टार्ट डूइंग द मेडिटेशन द वे दे टीच। ठीक है, इसके लिए सबके लिए मैं आपको टाइम दूंगी। दूसरा है, आपको बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज में एनरोल करना है और उसका इंटरेस्ट देखना है। जैसे घर में वो गैजेट्स के साथ स्पेंड कर रहा है, उसका भी एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि वीकली ही गेट्स this much time on the gadget. Try to make him busy in the physical activities as much as you can. इसके लिए आप लोग को शुरुआत करनी पड़ेगी, बड़ों को शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे दादा दादी भी घर में हैं, आप लोग भी हैं, आप भी घर के कामों से टाइम निकाल के थोड़ा वॉक का रूटीन निकालिए अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए। व्हेनेवर पॉसिबल बच्चे को नियरेस्ट चिल्ड्रंस पार्क जो हो वहां पे लेकर जाइए कि वो जम के एक्टिविटी करे। ओके, ही शुड फील सेटिस्फाइड कि हाँ उसका फिजिकल वर्कआउट हुआ है।
क्योंकि अभी ये जिम वगैरह तो नहीं जाएंगे बच्चे, है ना, और जिम वगैरह जाना कोई अच्छी बात भी नहीं है। अच्छा खाओ और अच्छे से हेल्दी एक्सरसाइज करो, एक फिट लाइफ स्टाइल बिताओ, तो उसका एक एग्जाम्पल हम बड़ों को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना ये सब रूटीन में लाइए कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो पॉसिबल हो, और बच्चे को जहाँ लेके जा सकते हैं, जहाँ उसका एक्टिविटी हो, ये सब कीजिए। डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, अलग अलग एक्टिविटीज भी उसकी चेंज करते रहिए। जैसे एक महीने के लिए इसको कुछ सिंगिंग क्लास में डाल दिया, मे बी वोकल्स में डाल दिया, फिर इंस्ट्रूमेंटल में डाल दिया। स्कूल से भी रिस्पॉन्स लीजिए, टीचर्स से पूछिए कि किस एक्टिविटीज में वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, व्हाट आर द पीरियड्स दैट ही लाइक्स टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। ठीक है, ये सारा आपका फीडबैक स्कूल से भी लीजिए, और जरूरी है तो बाहर में भी एक्टिविटीज करवाइए। जैसे मैंने देखा इस एज के बच्चों में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करने का काफी होता है, दे कैन कैच इट वेरी इजीली, क्योंकि ब्रेन बहुत ही शार्प है एंड दे कैन लर्न न्यू लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो अगर इनके स्कूल में कुछ फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, आप देखिए, ट्राई करके देखिए कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर वो कैच करना चाहता है तो वो कर सकता है, उससे आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो लाइक द टाइम विच इज ही स्पेंडिंग इन गैजेट्स, उसको भी आप लर्निंग में चेंज कर सकते हैं कि वो गैजेट पे कुछ ना कुछ लर्न कर रहा हो। सो मेक इट इंटरैक्टिव फॉर हिम कि कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो लेट्स टेक अ टाइम ऑफ 1 मंथ जहाँ पे आप राजयोगा सीख के आएंगे ब्रह्मा कुमारीज में, और ये सारी चीजें इनकलकेट करके फिर मुझे फीडबैक दीजिए हाउ इट इज ऑल गोइंग थ्रू। ठीक है, आई एम श्योर विल कम अप विद सम पॉजिटिव थिंग्स। तो लेट्स मीट आफ्टर 1 मंथ। ओके पीयूष जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक आप दोनों ही मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। यू। लेट्स मीट आफ्टर 1 मंथ। Okay. All right. So we do the third and the last scene after 1 month. Please welcome. नमस्कार अमर जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप दोनों? जी बहुत अच्छे हैं, एंड there's been a paradigm shift, you know, in the thought processes of both of us. Once, as guided by you, we visited the Brahma Kumari Center, and we did the 7-day course as you had guided us, and it was a paradigm shift. It was complete a U-turn, you know, and the knowledge that we got from there, and once we started implementing it into our lives, the entire thought process has changed, and we do understand that we are basically souls, and our child again is a soul, and he is born with his karmic account. So things will happen as per his karmic account, and yes, we are there to support him and guide him to our best. But yes, things will happen as destined, and we don't have much to, we don't have to push much into all these things. But yes, we have to keep you know, a strict vigil, and we have to take care of the child as much as we can. That is, we have to play our role to the best, what we have understood. And yes, the over concern that we had is not there, and we understand these type of things do happen in life, and we cannot, you know, impose anything on the child. We have to go according to the flow, you know. तो ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से वहाँ दीदी ने समझाया हर चीज को, और काफी अच्छा लगा हमको, काफी चेंजेस आए हमारे ओवरऑल लाइफ में, और हमारी थॉट प्रोसेसेस में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा थॉट जो है उसमें काफी चेंजेस आए। वी बीन एबल टू थिंक more positive, rather, to be very true, or we take it as a, you know, a journey that we are in, and बिल्कुल सही बोला आपने भाई जी। और मुझे खुशी हुई जान के कि राजयोगा का कोर्स आपने दोनों ने ही मिलके बहुत अच्छे से किया है, और उसके चेंजेस को अप्लाई करने के बाद आप एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं जो मैं सुनना चाह रही थी। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, और सच मानिए सभी का रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है, बिकॉज वो कोर्स का डिजाइनिंग ही ऐसा है, उसका कंटेंट ही ऐसा है कि काफी चीजें क्लियर आउट हो जाती हैं। तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हमारी लाइफ का जो होता है, जो हम काफी टाइम से न जानते थे या जानते हुए भी इग्नोर कर रहे थे, ये अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को बच्चे ही रहने देना, और उनको एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी समझना, जिनका अपना इंटरेस्ट है, उनके अपनी हॉबीज हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं,
और सोल लेवल पे ये जानना कि वो एक अपनी जर्नी पे हैं जो वो तय कर लेंगे। ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझने के लिए। उनको ग्रो करने देने के लिए हमें उन्हें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना और एक बहुत ही ऐसा एटमॉस्फेयर देना जहाँ पे वो फ्री हो करने के लिए वो जो चाहे। बस एक मेंटोर और गाइड की तरह हमको ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और गैजेट्स में है अगर तो कंटेंट्स का क्वालिटी कैसा हो। डाइट पे आप लोग ध्यान देना शुरू कर दिए हैं विच इज गोइंग टू ऐड टू हिज फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ बोथ। मेडिटेशंस आप लोग कर ही रहे हैं, तो दिस ऑल इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। और आपका जो एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं अभी आपसे जान पाऊंगी, मैं बस ये बोलूंगी कि बच्चे मशीन नहीं है, राइट? दे आर नॉट रोबोट्स, सो वी शुड नॉट ट्राई टू हैंडल देम विद अ रिमोट लाइक रोबोट्स। उन्हें उनकी जिंदगी हम जीने दें और हम उन्हें मौका दें कि वो खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। जब उनके अंदर की अवेयरनेस जागृत हो जाएगी, जब वो खुद समझने लगेंगे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, तो फिर वो सही तरफ ही जाएंगे। बिकॉज एज दे से कि जब आप सही टाइम पे सीड को वो करते हैं तो वो अच्छा फल ही देगा उसका, राइट? तो अभी हमारा ये सीडलिंग वाला स्टेज है कि हम उनके अंदर जो भी संस्कार डाल सकते हैं, जो भी हैबिट्स डाल सकते हैं, अपनी तरफ से अच्छा करके डालते रहे, और जरूर वो एक अच्छा पेड़ बन के एक फुलफिलिंग ट्री बन के हमारे सामने आएगा। सो डू एज मच एज यू कैन बट डू नॉट फोर्स। सो नीतू जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? We just want to thank you from bottom of our heart that you have been really a blessing for us. You could actually, make us realize that what are the loopholes that we need to look after. Although we had tried our level best, but then a guide or a mentor, you can say, or your counseling has really been an eye opener for us. So we are really happy, and we'll surely come back to you with the progress also, because every teacher, feels happy to see the results. So we will get back to you very soon with all the positive outcomes. Thank you so much. You're most welcome, and I really, really wish very, very best to both of you as parents. और आदित्य के लिए तो मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आई एम श्योर कि आपकी फैमिली साथ में बहुत बहुत खुश रहेगी और बच्चा भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एंड यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। Yes, I'm really happy. Few things I just want to, mention this Raj Yoga meditation and this Ayurvedic diet that you told, and the coding thing that you mentioned. So these few things have really, helped out us a lot. So we are just looking forward that many such things will, be there for our child. राइट हर किसी के अंदर ये मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला फैक्टर होता है नीतू जी। तो जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे ना एटलीस्ट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको समझ में आएगा कि उनके अंदर क्या क्या इंटेलिजेंस है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही फ्लेक्सिबल होके हम बच्चों को ग्रो करने दें और उनको ऑप्शंस दें जहाँ पे वो ग्रो कर सके। सो वी नो अबाउट द मल्टीपल इंटेलिजेंस दैट दे हैव। ठीक है, थैंक यू आप दोनों का, और उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में भी जरूर मिलेंगे और आपके बच्चे की प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। ओवर Thank टू you, Umaji. you। Thank you, Umaji. Thank you so much. Om Shanti. थैंक यू सुप्रिया। Thank you very much, Sister Uma, our today's counselor. And the topic was for a 10-year child who directed to mobile, and the complaint was filed by the parents. And the case is very handled by our learner counselor, Sister Uma. But this is a problem in many houses that parents complain that children are addicted to technology in various ways. It can be mobile, TV, or games, etc., etc. One thing we want to tell that in Silicon Valley, the people responsible for developing this technology in the world have banned their phones in their home. This is something surprising. They know the ill effects of it. They never allow their children that they should be exposed to this technology, because it is so harmful. So we can understand the serious consequences if not understood at the right time, because it can lead to depression, disconnection from the
people and children can be exposed to radiation. It can lead to ill effect for his health also. So keeping these all factors in mind, the suggestion given by our counselors are very effective. But we have to understand the responsibility uh, is totally of parents. You cannot blame the technology. It's come to your house because we are responsible what to take in our home and what not to take it. So it is not that we can close the door, or else we can minimize the adverse effects of this addiction habits which children develop at a very young age, because cannot say that only parents are responsible, but of course children uh, are not, if taught properly at the right time, that what is good and what is bad for them, because they are innocent. So definitely parents bonding with the child, giving proper time, and taking care of the child when he's young, and telling them the consequences of the technology in their life. But of course, children have a lot of energy which has to be channelized in the right way. And it is our responsibility that if we want to, if they are addicted and if we want to take the mobile from them, we have to give them some uh, alternative for this. The alternative can be in the form of physical games, or maybe storytelling, or maybe some indoor games which we used to play when we were young, like ludos, karate, or carom, etc., etc. Of course, good activities. With the main thing is that parents should give quality time to the children. So definitely, these all will help to get our children uh, to use the energy in the right, because children have a lot of energy, and it has to be used in the proper way. That is the only way we have to see that it is done at the right time. So thank you very much to our counselors, Soma, and to our counselors. And session was live on YouTube as well as Facebook. And we are available for any kind of this addiction problem. If any parents have got, they can contact to us on our website, named as pictureseva.com, that will be the counseling form. And also we are available on our WhatsApp number 95943 and request the viewers to comment our YouTube channels to their friends about this. Until the session comes to an end, and good night to all of you. And of course, Raj Yoga meditation messages are very useful. Parents learn it, and definitely it will have a lot of good effect in their houses, because wherever the spirituality is followed, definitely vibration will be always of peace. Thanks very much again to all our viewers and our counselors, for the various participants and to students. Request our regional session again so that we can summarize. Om Shanti. Thank Thank you, you. sir. Good night. Om Shanti.